आप सभी को मेरा नमस्कार। जब अचानक आपको एक ऐसा दृश्य मिलता है जिसकी चाहत तो आपके मन में है, पर आपको लगता है कि आज वो नहीं होगा और वो आपके समक्ष हो, तो बात कुछ अजीब हो जाती है, दिल और दिमाग के बाहर हो जाती है। मैं आभारी हूं आदरणीय श्रद्धेय बजरंगलाल जी गुप्ता का, जो मेरे जैसे अनेक लोगों के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, हमारे आदर्श रहे हैं। उनके सुझाव पर यह कार्यक्रम मैंने स्वीकार किया, पर जब उनके स्वास्थ्य की सूचना मिली तो मुझे लगा कि वो यहां उपस्थित नहीं होंगे। I can tell you, young friends, boys and girls, read Dr. Bajranglal Gupta. He exemplifies a sense of our civilization, the best of economics. His books are very enlightening. You may not have the occasion to directly benefit out of his discourse, पर मुझे कुछ समय के लिए सौभाग्य मिला है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का दायित्व स्वीकार करने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले मैं आपके निवास पर भी गया और उसी परिसर में आपका कार्यालय भी है। His presence amongst many others here is strongly indicative that this institution and this august gathering, everyone present here, nurtures a spirit of nationalism. Has at his heart India uppermost and wants to fructify the dream of a developed nation. I therefore greet each one of you with folded hands and a strong belief that I am before people who are nerve center, epicenter of great affirmative change that will accelerate our journey upwards. Dr. Nandkishore Garg, founder, chairman, advisor mates, a very humble man, has seen politics, has seen public life, but he shall ever be remembered for being founder of this organization. He subscribes to what is very close to our civilization, convergence of good minds to nurture an institution. His sense of gratitude to everyone and his donors touched my heart. I am sure the journey ahead will be very rewarding. Sri Vinit Kumar Gupta ji, chairman mates, I know of him, but this is our first meeting. But sometimes you don't have to meet a man to know about him. He works
with team spirit and does not de-spirit those who are spirited for the nation. A chairman, I am sure, he will take note of the emerging challenges for which our young boys and girls have to be prepared, particularly with respect to disruptive technologies. Boys and girls, you have to find solutions. Disruptive technology is part of your basket, and you can be the early bird. I am sure this institute over the next 25 years, when it will reach its Golden Jubilee celebrations, around the same time we celebrate centenary of our independence. It will be a lead institution in new areas, scientific areas that matter globally. Give us cutting edge also in soft diplomacy. डॉक्टर महेश वर्मा जी, इनके बारे में कहा गया कि दांतों के डॉक्टर हैं। मैं इनका पेशेंट रहा हूं। इनकी क्या खूबी है, इनकी क्या खूबी है पता नहीं, इनको नहीं पता, मुझे नहीं पता। जब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना, उससे पहले इन्होंने मेरे दांतों की पूरी जांच पड़ताल की और कहा कि ठीक है। Distinguished members in the audience, I support some of them. I know of you. Recognizing you by name carries a potential danger of missing out a near and dear one. My greetings to all of you. An institution is defined by faculty more than the infrastructure. Infrastructure is need of the society, need of the institution, but faculty is its fragrance. My salutations. Greetings, and also members of the staff, officials, but most important for me, why I am here. I am here for dear students, boys and girls. बजरंग लाल जी का मैसेज था कि आपको बच्चों से बात करने का मौका मिलेगा। Before coming here, boys and girls, I thought कि मैं आपसे क्या बात करूं। भारत की विकास यात्रा की बात करूं, कितना बदलाव आ गया बात की करूं, क्या क्या मैंने मेरी आंखों से देखा बात करूं। तो मेरे मन में एक बात स्पष्ट थी कि मैं आपसे आपकी बात करूंगा, मैं आपसे आपके भविष्य की बात करूंगा, और वो बात करने में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। Let me first come to the state of the nation. I was elected to Parliament, young boys and girls, in 1989. I was lucky to be a union minister. I saw three things then. और मैंने मेरी आंखों से देखा, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, उस भारत का सोना हवाई जहाज से फिजिकल फॉर्म में स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया। Why? To sustain our fiscal credibility. What was the occasion? Our foreign exchange was dwindling around $1 billion US. ये हालात थे। Boys and girls, you are lucky. Our foreign exchange reserve today
is over 700 billion US dollars. 700 times. The second disheartening scenario which I saw, 89 to 91, I had the occasion to go to Kashmir because the situation was very turbulent. A cause of deep concern. The Prime Minister was also there. वो दृश्य आज भी मैं भूल नहीं पाता. हम पहुंचे, डल लेक के पास एक होटल में रुके और हमें लगा हम उजाड़ में आ गए, वीरान में आ गए. हमें दर्जनों से ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे. Boys and girls, I had the satisfaction as chairman Rajya Sabha to hear from the government replying to a question कि पिछली साल कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट गए थे. Look at the change. The third thing which I noticed, 89 to 91, there was atmosphere of gloom, hopelessness, and we thought we are sinking. As a nation, our passport did not carry that kind of a response. What we saw then, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस हमारे दिमाग में नहीं था. हर संसद सदस्य को, मार्क माय वर्ड्स, एक अधिकार दिया गया कि आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर आते हैं, आपको हर साल 50 गैस कनेक्शन मिलेंगे, मुझे भी मिले, और 50 टेलीफोन कनेक्शन. और वो हमारी ताकत थी. हमसे याचक बनकर बड़े बड़े लोग आते थे, हम कहते थे गैस कनेक्शन दे दो. और आज आई डोंट वांट टू टेक द नंबर 170, 150 और 130 million connections were given free to it. हमने उस समय देखा कि भारत के संविधान का मूल सिद्धांत है इक्वलिटी बिफोर लॉ. पर तब से और काफी लंबे समय बाद तक भी कुछ लोगों का मानस रहा हम कानून से ऊपर हैं, कानून हम तक नहीं पहुंच पाएगा. वी हैव सम काइंड ऑफ अनरिटन immunity from law. Corruption was a password. It has been thereafter also. To a job, to a contract, or to an opportunity. Boys and girls, आज के दिन, you are lucky to have an ecosystem where governance is transparent, governance is accountable, corruption is password. To appear before a court, corruption is a password. To reside elsewhere other than your house. Privileged pedigree has made exit. Equality before law is a ground reality. आज के नवयुवकों को, नवयुवतियों को चाहिए क्या? They don't want support. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे में मेरिट है, बिना मेरिट वाला आगे जा रहा है, फराटे से जा रहा है. Now, patronage has yielded to meritocracy.
बहुत बड़ा चेंज है। एंड देयरफॉर बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर लकी एंड फॉर्चुनेट to be getting such quality education. You leapfrog into the larger domain where you will find you can exploit your energy, your potential, realize your dreams and aspirations. ये सब संभावनाएं आपके सामने आज हैं। इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभव है कि एक संस्था जिसने 25 साल की यात्रा पूरी की है, उसके समक्ष आज बहुत बड़ा मौका है। I am delighted to note the statistics and to inject in the society over 20,000 professionals to contribute in varied forms is fine. But now, the board of governors, founder chairman, the chairman and everyone concerned have to sit together to brainstorm how we become in certain areas one of the highly rated global institutions. How can we be crucible of innovation and research? और आपके माध्यम से मैं आज हमारी उद्योग जगत को एक बात कहना चाहता हूं, कई बार कही है, अभी पूरी तरह से सजग नहीं हुए हैं। Investment in research and innovation is investment in the present, in the future. Investment in your growth, investment in making everyone happy. Innovation and research are driving engines of economy. और ऐसी परिस्थिति में boys and girls, remember, disruptive technologies, artificial intelligence, Internet of Things, data analytics, machine learning, blockchain, 3D, even 6G. They are game changers. ये तभी आगे बढ़ेंगे जब आप जैसी प्रतिभाएं इनमें ध्यान देंगे। You have to be trained for it. We are at the cusp of another industrial revolution. It offers both opportunities and challenges. इसमें कोई शक नहीं है, ये टेक्नोलॉजी हमारे घर में आ गई है, हमारे हाथ में आ गई है, हमारे दफ्तर में आ गई, हमारी कार्यशैली में आ गई है। They can demonize us. They can demolish us. But if we channelize them, convert opportunity out of them, we can go ahead. एक समय था, boys and girls, हमारा समय था, जब कोई भारतीय विदेशी संस्था में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करे, ये सपने में भी नहीं सोचते थे। And आज के दिन look at the big change. There is hardly a global outfit or institution where an Indian genius and mind is not in dominant position. You are future dominant position holders in the nation and outside. You are the most important component of our growth engine because you are the fuel of it. And therefore, आपको बहुत चिंतन मंथन करना पड़ेगा। आपको यह जानना होगा कि आपके लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। देश की तीव्र प्रगति जिसमें सभी को आनंदित होना चाहिए,
भागीदार होना चाहिए, कुछ लोग क्यों अवरोधक बन रहे हैं, ये आपका काम है. I have no doubt and I have firm belief Gen Z and your generation are the most important. We can only slightly handhold. You are the driving force behind politics and economy, social harmony and growth. I would therefore urge you to kindly set your targets, because you are in a Bharat that is performing admirably in sea, on land, in sky and in space. You have blue economy in sea. It offers you vistas of opportunities. Same about space economy. We are amongst few nations to focus on that. But it can fructify only with sharpened, skilled human resource. And that human resource is in institutions like yours. My young friends, institutions such as yours are organic, nurturing centers of entrepreneurship that unlocks growth vistas and help attain nation a developed country. And for that we have to have over $3 trillion economy by 47. We can take pride that we are the 5th largest global economy at the moment, shortly to be the 3rd largest. But let us not rest content. Our per capita income has to go 8-fold. You all have to work for that. Your institute nomenclature is contextually relevant. As Maharaja Agrasen, what does he exemplify? Trade growth and societal prosperity. आप उनके जीवन का अध्ययन कीजिए. You will be inspired and motivated. मैं सदा इस बात की वकालत करता रहा हूं कि जो लोग हमारे ट्रेड में है, बिजनेस में है, कॉमर्स में, इंडस्ट्री है, they must not feel heat of the system. They must have respect in society. They are wealth creators, they are job creators, they are economy drivers. They contribute to social harmony. They have learned the art in this country to give back to the society. By and large, they do it. Even our freedom movement is dotted by their contributions. Go to any part of the country, particularly the state to which Bajrangla ji belongs, to name J.D. Bidla ji, Bajaj Sahab, they made huge contributions. And here this institution is nothing but product of such a contribution. Our startup ecosystem, and mind you, startup ecosystem is driven by you people. You need to take note of it. It's a globally acclaimed mechanism we have evolved. And this track record is over a decade. 118 unicorns. You know it more than I do, what unicorn means. Worth 354 billion. I'm sure, boys and girls, it will stimulate you. It will inspire you to leapfrog into that domain. Gone are the days when economic achievements and accomplishments emanated only from established business families. All over the globe, there has been a big change. Boys and girls like you are doing it.
And look at our political space. A tribal woman is the president, and OBC is the prime minister. And son of a farmer who could get good education because of his scholarship is before you in this capacity. Economic scene is no different. I have no doubt I have before me future entrepreneurs, those who will start new ventures, attain new heights. Each one of you, mark my words, has a potential to enrich the entrepreneurial landscape of this country. The national education policy evolved after 3 decades of intense discussions, taking into consideration hundreds, thousands of inputs. What does it provide now? Experiential learning, critical thinking, while enabling industry-academia partnership for research, and the new mechanism which has been evolved for internships for the youth by the government in the last budget is going to be a game changer. This integration, young boys and girls, of entrepreneurial skills and design thinking across education levels aims to establish entrepreneurship as a viable career path for students. Think about it. You can think in one way, you will have an option, a fat pay package, a lavish house, a limousine, a comfortable life. You will be contributing there. I have nothing against it. I will be told immediately, Jagdeep, Dhankhar is against this. No, I am not against. It is your due. Only people from this category will have it. But that's not the only option. There are many others where you can go beyond this. So examine that whole. And what you will face on the way? Affirmative governance, extensive technological applications in service delivery. I see it for myself. In this country, more than 100 million farmers thrice a year get direct banking transfers. I am not impressed that the government is doing it. What is really heartening for me is कि किसान रिसीव करने को तैयार है. Kisan has been enabled. And why it happened? Because a visionary prime minister brought 500 million people in banking inclusion by opening accounts. ये big changes हैं. Young boys and girls, there are 2 indicators. One is World Bank's ease of doing business ranking, and another is Global Innovation Index. In both these, we are having continual upward rise. Continual. But let me tell you, at the end of the day, we are not robots to promote economy. We are human beings. We are part of a nation that is 5,000-year-old civilization. Tolerance, boys and girls, is a virtue. It is deeply embedded in our civilization ethos. It is premise of harmony and inclusivity in society. It is inalienable facet of सामाजिक समरसता. सामाजिक समरसता के बिना बाकी चीजें इरेलेवेंट हो जाती हैं. घर में शांति नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कितनी वेल्थ है, मकान कितना बड़ा है. सामाजिक समरसता हमारा आभूषण है. सदियों से हमने इसको देखा है. I would urge all of you. शुरू में लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है,
पर आप देखोगे आपके माता पिता, आपके अध्यापकगण, आपके बुजुर्ग, आपके पड़ोसी, आपके साथ रहने वाले लोग जिनसे आप बात करते हो, आप टॉलरेंट हो, सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हो, तो बात ही कुछ अजीब है। वो ऐसी बरसात होगी जिसमें हर कोई सुख अनुभव करेगा और किसान प्रफुल्लित होगा। आई अर्ज ऑल ऑफ यू, बी रिसेप्टिव, बी टॉलरेंट, दैट विल बी एवर रिवार्डिंग, एंड हर कार्य करते समय ये देखिए कि सामाजिक समरसता बढ़े। फ्रेंड्स, the urge to steadfastly cling to one's point of view, जब आदमी खुद का मत होता है ना, तो मदहोश हो जाता है कि मेरा मत है, दूसरा मत कैसे हो सकता है, मेरा मत ही सही है। जो ये कहता है कि मेरा मत ही सही है, अक्सर उसका मत गलत होता है। We should ever be prepared to listen to the other point of view. आखिर वो कहने वाला भी तो अपना मत रखता है। And more often than not, young boys and girls, you will find the other point of view enriching and correct also. ये तो कभी बाध्यता नहीं है कि दूसरा अपनी बात कहेगा और हमें उसको मानेंगे ना, आवश्यक नहीं है। पर उसकी बात न सुनना, उस पर चिंतन न करना, मंथन न करना, यह हमारी सभ्यता का अंग नहीं है। हम मन भेद में कभी नहीं जाते। मतांतर रहेगा। मतांतर एक ऐसी एनर्जी है that allows individuals to course correct. और कुछ नहीं तो सिक्के का दूसरा पहलू तो दिखता है। And therefore always I will urge, please lend your ears before your vocal cords become instantly operational. फ्रेंड्स, जब आप यहां से बाहर निकलेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, आपके पास चॉइस रहेगी। एंड आई हैव नो चॉइस ऑफ एनी चॉइस, ऑल आर फाइन, बट मेक द चॉइस एज पर योर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। You can be a job giver, you can be a job provider, you can be a job seeker, all three are fine. But if your aptitude says something, then don't fear failure, don't have tension, don't have stress. Failure is a necessary part of growth journey. Greatest achievements have never been accomplished without failure. Success of Chandrayaan 3 lies in major success of Chandrayaan 2, but Chandrayaan 2 was not 100% success. Friends, I would urge you, whatever choice you make, believe in your nation, believe in your nationalism. This is greatly of your concern because our economic nationalism is getting compromised, because some people care more about fiscal gain. No fiscal gain can justify compromise of economic nationalism. Look at our imports in billions that are avoidable. You are the category, young boys and girls, along with Gen Z, to find a solution. You can take a resolve. We will cut down avoidable imports because of our entrepreneurship. It will have immediate impact. We will save billions in foreign exchange. Our people will get work here in thousands and lakhs, and entrepreneurship will blow.
And I would therefore urge, always steer your mind when you think of economy, think of स्वदेशी. स्वदेशी हमारा मूल मंत्र होना चाहिए. हमारी आजादी की यात्रा के अंदर महत्वपूर्ण कदम था. आज के दिन आप देखिए, बीइंग वोकल फॉर लोकल स्वदेशी का ही फैसेट है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्वदेशी का ही फैसेट है. डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर्स स्वदेशी का ही प्रोडक्ट. आई वेंट टू एन इंटरनेशनल एक्सपो ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. इसलिए कह रहा हूं कि आपने मेरे को जो हनुमान जी, जो मेरी जाति के गुरु हैं, आपके भी पूजनीय हैं, पर हमारे तो हैं ही. राजस्थान में डॉक्टर साहब जानते हैं, जाट हनुमान जी का पूजक है. और इसके बारे में कई बातें अदरवाइज भी कही जाती हैं कि देखो हनुमान जी ने क्या क्या कर दिया, खुद का तो हिता ही नहीं. आप ये देखिए, जब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ उस कार्ट के अंदर जाकर सभी जिलों के प्रोडक्ट देखे, आपके मुरादाबाद का भी देखा जहां आप वाला बन रहा है, मैंने फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, आप करिश्माई काम कर सकते हो दुनिया के अंदर. नंद किशोर जी का तो एक्सपोर्ट हजारों करोड़ का उसी से हो भी रहा है, पर आप नए आइडियाज ला सकते हो. मैंने उसी समय, मेरे सहयोगी भालेकर है नहीं यहां, अभी थे, उनको कहा अभी संसद टीवी की टीम को अलर्ट करो, मुझे हर एक जिले की स्टॉल के बारे में सेपरेट जानकारी चाहिए, वीडियो भी चाहिए, स्टिल फोटोग्राफ में भी चाहिए. और जब वो देखी मैं दंग रह गया कि कितना इनोवेशन हो सकता है, क्या मार्केटिंग हो सकती है. वी कैन गेट बिलियंस एंड बिलियंस. दैट हैज टू बी डन बाय यू पीपल. सो प्लीज nurture in your mind, heart and soul concept of स्वदेशी. एक बात पर और ध्यान दूंगा. I will leave you with this thought. नागरिक कर्तव्य. हम जो राइट्स हैं उनके लिए बहुत सजग रहते हैं. एवरी राइट इज क्वालिफाइड बाय योर ड्यूटी. एंड अकॉर्डिंग टू मी, जैसे राष्ट्रहित राजनीतिक और व्यक्तिगत हित से ऊपर है, उसी तरीके से आपका हर अधिकार, मौलिक अधिकार, उसके ऊपर आपका उत्तरदायित्व है. आपके नागरिक का कर्तव्य है. ड्यूटीज मस्ट एवर हैव प्रेसिडेंस ओवर राइट्स. एनी एंड एवरी जॉब इज इंपॉर्टेंट. कुछ भी करो, किसी भी हालत में करो, काम बड़ा छोटा नहीं होता है. उस काम को बड़ा छोटा करता है काम करने वाला. जो भी काम करो निष्ठा से करेंगे, लोग कहेंगे उस जैसा नहीं देखा. वो पद पर नहीं जाता, उस काम पर जाता है. I conclude expressing my deep hope, expectation and confidence that when this institute celebrates and has its golden jubilee, around the time when Bharat will be celebrating centenary of independence, this institute will be a significant contributor and partner in our growth story. Thank you very much.